understand depression through understanding the psychological theories of depression. So depression nowadays is a very common word, and you might have heard someone saying, or probably might have said it yourself, that I'm feeling very depressed today. But is that really depression? No. It might be mere sadness, but it's not certainly depression. So what is depression? We'll try to understand what depression is first. So depression is marked by lost interest in activities. जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमें ऑफन प्लेजरेबल लगती हैं, when the person is depressed, he or she starts losing interest in those very activities. There's fatigue and loss of energy. There's changes in sleep patterns and changes in dietary patterns. And feelings of worthlessness and feelings of hopelessness. Depression also includes recurrent thoughts of death. So a person who is depressed, he or she can't really get out of bed and perform all the daily activities that any normal person like you and me can do. Now we'll try to understand through some of the psychological theories. So first is the Beck's cognitive model of depression. This comes under behaviorism theory. So according to this, first, some dysfunctional beliefs and assumptions can get formed through some early experiences. So if a person has formed an assumption, the assumption form हो सकता है that if everyone doesn't love me, then my life is worthless. अब ये assumptions, false assumptions and beliefs may get activated when another critical incident might happen. So if this very same person who had this assumption कि अगर मुझे कोई प्यार नहीं करता तो I am worthless, अगर उसकी ज़िंदगी में कभी उसे social rejection face करना पड़ेगा, so this assumption will get activated and the person will actually start feeling that he or she is worthless. अब इन negative assumptions से और negative automatic thoughts भी produce होंगे and these thoughts get formed in a negative cognitive triad. So your negative thoughts will be centered around yourself, the world and the future. आपको लगेगा कि आप भी वर्थलेस हैं, द वर्ल्ड ऑल्सो डजंट लव यू एंड हेंस देयर इज नो होप फॉर अ फ्यूचर. एंड इस सबसे अल्टीमेटली फिर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन भी दिखने लगेंगे उस इंसान में, लाइक सैडनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस. सो फर्स्ट वील सी अबाउट थ्योरी ऑफ हेल्पलेसनेस. So Martin Seligman has proposed a phenomena of learned helplessness. What this means is that helplessness कि मैं कुछ नहीं कर सकती can also be learned. We'll understand this through a very simple experiment that had been performed earlier. तो अगर dogs को पहले दिया जाए some uncontrollable shocks and repeatedly यही दिया जाए तो the dogs will learn कि वो कुछ नहीं कर सकते इस situation में. They will learn that they are helpless in such a situation. तो आगे क्या होगा अगर उन्हें कभी कंट्रोलेबल शॉक्स देंगे जिन्हें डॉग्स इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, देन ऑल्सो दे वोंट रिएक्ट टू द सिचुएशन बिकॉज वो सीख चुके हैं, ये लर्न कर चुके हैं कि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते. सो द सेम हैपन विद पीपल. वी लर्न टू रिमेन पैसिव इन एनी सिचुएशन जिसे हम चाहे कंट्रोल भी कर सकते हैं. दिस इज द थ्योरी ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस. यही चीज़ें लाइफ में भी हो सकती हैं. सो थ्रू वन और टू इंस्टेंसेस पीपल लर्न दैट दे आर क्वाइट हेल्पलेस इन सिचुएशंस एंड इसकी वजह से दे आर अनमोटिवेटेड टू रिस्पॉन्ड इन फ्यूचर एंड दे ऑल्सो स्टार्ट शोइंग डिप्रेसिव सिम्टम्स. नाउ वी लर्न अबाउट थ्योरी ऑफ होपलेसनेस. सो अकॉर्डिंग टू होपलेसनेस थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, पहले एक स्टेट ऑफ होपलेसनेस एक्सपीरियंस होगी जिसमें द पर्सन विल स्टार्ट बिलीविंग दैट ही और शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द फ्यूचर and the person will also expect bad outcomes to occur. Now इसके साथ ये भी जानना important है that depression prone individuals tend to make global and stable attributions for negative events. यानी कि उन्हें लगता है कि हर चीज़ negative ही होगी and that they are unworthy. Depression is very much prevalent in India today. And from next time, if you feel yourself being trapped in feelings of worthlessness and hopelessness, just remind yourself that life is much more than these negative events. Thank you.